Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today again we are moving towards the chapter. What chapter? That is chapter 3, US hegemony in world politics. So far we have seen how did one superpower collapsed after 1991. The two superpowers that emerged in the whole of the international arena, and it it attracted, it has influenced the whole of the world with two of the superpower image. One is US, one is USSR. And then for something or the other, for some reasons, it was seen that USSR collapsed in 1991. So that led to the end of bipolarism in the international arena. And now today we are studying up, or we all know that there is an international arena, there is unipolar system, and that is what US, because one superpower died, collapsed, so it remained only one, that is US. Okay, so US is influencing the world with its own power, with its own style, with its own culture. Okay, politically, economically, diplomatically, militarily, it is influencing the world, whole world, and by force, or rather by maybe by just influence also, maybe by attraction also, many countries are adopting the culture, the ideas, the style, the pattern of US. Okay, so in this chapter we have seen already what that we have seen US hegemonic power. It deals with three areas. Okay, that is US hegemony as hard power, US hegemony as structural power, US hegemony as soft power. Now again let me remind you before going to that area today, what is hegemony? Hegemony means the dominant power, the leadership role, the strong militarily, economically, politically, culturally role that is played by one state upon the others. This is known as hegemony. So when we define this hegemony, okay, when we define this hegemonic power today, so we can always imagine or measure that US has all the capacities of leading the world in its hegemonic way. And so that's why it is in today we are living in a unipolar system, and the boss of the whole world today is US. Okay, so in this chapter we have seen how did US as a hard power, it ruled the world militarily, it ruled the world, it is strong in its power, in its strong in its naval base, it is strong in its air force base, it is strong in its army base. Okay, it has the nuclear power. If students, I must remember you, or I must remind you, okay, that nuclear power is first of all conducted by whom? By US. So the first country that has capacity to hold nuclear power, nuclear weapons is US. Then followed by the other countries. Then militarily we have seen it has lethal weapons. It can strike in any parts of the world in absolute way and in relative way. Okay, so we have also seen how did US in technological way, it is very much strong in its arms and ammunition, in its way of dealing with the army capacity, the army that they are training, taking up the training. Okay, they are so much in a very tactful, skillful, intelligent way that they are taking the training, and US is giving them the training. Okay, that these army people are so much strong. Okay, so anywhere when they can go and they can strike, it is striking up in a very good way, in a very strong way, and that is US in its hard power or in its military power. Okay, then we came to the next one. What one? That was US hegemony as structural power. And what is the structural power? If you remember, structural power is the economic power of US. So in this area we have seen
how did US is influencing the whole world with its global public goods. So we have covered up two areas, sea lane of communication and internet system. How these things are being run up, okay, this being influenced in the world. Sea lane of communication means naval power, that is rules and regulation used by US today, okay, in the naval area, in the sea area, sea sector. And then we have seen how did internet system came into being. That was the US military research product brought out in 1950. And then on it went up. Today, if we define the whole world without internet system, we will just think that is blank. हमें सब एकदम धीमा धीमा दिखाई देगा. ओके, क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बिना हम कैसे चलेंगे, नेटवर्क के बिना हम कैसे चलेंगे, नेटवर्किंग सिस्टम, सर्फिंग सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, ये सब में तो हम जीते हैं आज. ओके, so the whole world is being connected, interconnected, I must say, that was brought out by US. Okay, and then we have seen how did US has the share, 28% share, economic share in the whole world, and about 20% of the 15 to 20% of the domestic share, domestic product that it is producing. Okay, and then we have seen how did that degree came into being. What was the degree? MBA degree. Okay, Masters of Business Administration, that came into being, that was used by US, they have thought, okay, they have thought that this degree, if a person takes skillful degree, skillfully, if it is tackled, it is trained up, okay, to the people, then this business can go in a long way. And so they have established what is called Masters of Business Administration. And the first school, if you remember, what? That is the Wharton School, 1881. And afterwards, it went and spread to the rest of the world by 1905. So it was seen how did US has gone through in its military power, in its economic power. US has hard power, US has structural power. Okay, so far we have covered up that much area. Today, students, we are taking up another area, and that is what? That is the soft power, the third power of US. See one thing. I have told you that in economic sector, US is running the economy on capitalist line. US is following the capitalist policy. And that's what the rest of the world is following day by day. They are adopting this method, this economic way, with slight modification or maybe slight alternation. But somehow or the other, किसी ना किसी तरह से ये कैपिटलिस्ट पॉलिसी जो वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं डिफरेंट कंट्री. हमने इंडिया में भी देखा कि इंडिया में क्या होता है, क्योंकि 1991 इंडिया बहुत इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो रहा था, स्लो जा रहा था. Then Indian government has adopted LPG, okay, and in their privatization, globalization, liberalization came into being. तो कहीं ना कहीं इस तरह से चाइना ने भी कभी अडॉप्ट किया, इंडिया ने क्या हमने बोला, चाइना ने भी कभी अडॉप्ट किया, यूएसएसआर जो रशिया बन गया उन्होंने अडॉप्ट किया, और कितना सारा कंट्री ने ये अडॉप्ट किया. तो दैट थिंग, एक जो चीज जो यूएस स्टार्ट करता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से that it goes on and it is being adopting by other countries, following by other countries. Okay, not by forcefully, but because of maybe their personal reasons, maybe because they need the benefit, that by adopting that policy, maybe they will get the benefit, maybe that one, or maybe that this high superpower country is there, so we must make friendship with their superpower country, so that we will be in a very good book and we will have some of the support in economic sector from their superpower country. So बहुत सारा कारण, बहुत सारा रीजंस है, बट उन्होंने तो अडॉप्ट किया, डिफरेंट कंट्री ने अडॉप्ट किया इसको. तो सही सेम इस तरह से देखा गया इन सॉफ्ट पावर ऑल्सो दैट यूएस कल्चर. अभी सॉफ्ट पावर जो है, इस सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे, that is US culture, US culture, cultural power of US. तो देखा गया not militarily, not economically, but culturally also
they are strong, they are dominating the world, they are influencing the world, they are attracting the world. The style, the pattern, the fashion, okay, if song, if dance, if some type of wearing of this clothes fashionable, okay, haircut fashionable maybe, okay, then some of the other ideas of food item system or other way of living system, all things are being influenced by this American culture to the other or to the rest of the world. Okay, so today we will go to this area, soft power, US hegemony as soft power. तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ लिखा है, ओके, तो आपके जानकारी के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सी हियर, soft power is the ability to shape the preference of others through appeal and attraction. ये एक मैंने डेफिनेशन आपके कन्वीनियंस के लिए दिया है कि अगर सॉफ्ट पावर क्या है. सॉफ्ट पावर मतलब अगर किसी कंट्री अडॉप्ट करता है सॉफ्ट पावर को और इस ये अडॉप्शन में चलते रहता है, मतलब ये इसको एक्सरसाइज करता है यूएस. सो दैट मीन्स दैट दे आर अप्लाइंग दैट पावर, अप्लाइंग दैट कल्चर to its own country, and that culture is being following by the other countries of the world. Okay, तो इसलिए इसका डेफिनेशन है that is ability to shape the preference of others. Others यहाँ पे कौन है? Different country. Okay, through appeal and attraction. तो यहाँ पे जो लिखा हमने appeal and attraction, तो see here, it is not forcefully, it is not coercively, it is not by its dominant nature. Okay, it's not by threatening but by appealing and by attraction. तो उनका कल्चर, उनका पैटर्न हमें अपील करता है, हमें अट्रैक्ट करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम अडॉप्ट करें. ठीक है. सो सॉफ्ट पावर मीन्स दिस थिंग. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. ये जो इंसान है जोसेफ नाई ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन 1980. दिस सॉफ्ट पावर कॉन्सेप्ट, ओके, सॉफ्ट पावर जो है वो सॉफ्ट पावर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्सन जोसेफ नाई इन 1980 इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर मीन्स, तो मैंने मीनिंग बोला आपको. सी हियर, ही हैज रिटन ए बुक, मैंने यहाँ पे लिखा बुक. इन 1990 एक बुक आया जो उन्होंने लिखा जो बहुत फेमस हो गया. ओके, नाउ दैट इज बाउंड टू लीड. ओके, that is bound to lead the changing nature of American power. Bound to lead the changing nature of American power. तो अमेरिकन पावर उसको तब बाउंड टू लीड मतलब किसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे? जो डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट नेशन है, दे आर टेकिंग अप अडॉप्टिंग दैट थिंग. और इसको लीड करके कौन लेके जा रहा है? America. Okay, so this book deals with all the soft power influence of America on the other countries of the world. फिर उन्होंने और एक किताब लिखा, ओके, उसमें भी अमेरिका के बारे में था. 2004 सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो इसमें जो लिखा उन्होंने ये आम तरह से लिखा है, तो नॉर्मल कॉमन में लिखा है ये, बट इसमें भी जो दर्शाया गया है जो बहुत सारा चीज दैट वाज ऑफ अमेरिकन कल्चर. ओके, तो देखा जाता है कि इस सब जगह में सॉफ्ट पावर अप्लाई हो रहा है. कहाँ पे? फैशन, स्टाइल, ओके, उसके बाद खाना पीना, रहना सहना, सब जगह पे ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है. तो ये जो स्टाइल अप्लाई होता है, ये जो कल्चर अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज सॉफ्ट पावर. ओके, और इसको खुद ब खुद हम जब अडॉप्ट करते हैं, ओके, विथ अट्रैक्शन, दैट इज सॉफ्ट पावर. ओके, now see here, now I have written down some points here, and that is what of the soft power, and this all deals with soft power of US hegemony. Okay, now see, US has the ability to create consent in its favor, social, political and ideological sphere. मैंने एरिया लिखा है यहाँ पे. It has the ability to create consent in its favor. Create consent मतलब हम खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं, हम खुद ब खुद खुश हो जाते हैं उनके कल्चर को. अगर सोच लो वहाँ पे हमने कुछ ड्रेस देखा, कुछ हेयर कट देख लिया, तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं. या फिर हमने कुछ उनका फूड स्टाइल खा लिया, ओके,
तो हम जब ये सब हम अडॉप्ट करते हैं तो वी बिकम वेरी मच हैप्पी, वाह we are adopting what American culture, American way of living. Okay, so that consent is being built up in the people. Okay, और वो कैसा आया, not forcefully, खुद ब खुद, attracting, appealing, attraction, influence, बहुत सारा तरीका से. Okay, next, US can persuade other countries to view the world in a manner favorable to its ascendancy. मतलब it can pursue, ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लगा है, ये जो वर्ड है ये बहुत मीनिंगफुल है, consent, persuade. Okay, तो US can persuade other countries to view the world in a manner favorable to its ascendancy. मतलब इसका जो अपना जो पावर है, अपना जो एरिया है, अपना जो स्ट्रक्चर बना के रखा उन्होंने, ओके, इसमें खुद ब खुद the other countries view the world in a manner favorable to its ascendancy. ओके, तो कहीं ना कहीं जो यूएस का कल्चर जो डिफरेंट कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, ओके, डिफरेंट कंट्री का बहुत सारा मीनिंगफुल चीज निकल के आ रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स में कहीं ना कहीं यूएस का भी फायदा हो रहा है बहुत सारा चीज में. US is having and gaining more and more power, more hegemonic power, more soft power has been क्या बोल सकते हैं उसको, adopting by the different countries. और जितना अडॉप्ट करके जा रहे हैं डिफरेंट कंट्री, US is gaining it सक्सेसफुल वे. इसका पावर, इसका एसेंडेंस, इसका जो सुपर पावर का जो एक रुतबा बना के रखा है US ने, उसके ऊपर सिर्फ आपका परसेंटेज ऐड होते जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, नाउ सी next one is US can regulate the behavior of weak states in a manner that suits its own interest. Now this is what, देखो, after the Cold War, actually after the Second World War and Cold War era के time में भी there are so many weak countries in the world which gain its importance. Okay, why? Because they became independent. 1945, 1947, 45, 46, 47, 48, ये जो एरा उस टाइम में देखा गया, वेरियस कंट्रीज, अफ्रो एशियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बिकेम independent from their colonies. Okay, and these countries they are having the new style, new way of living. और बहुत सारा country they are making friendship with US. Okay, or maybe they are inviting US to come to their country and set up multinational companies, MNC. तो मैंने आपको MNC के बारे में बोला कि if MNC comes, it creates the whichever country comes to the weaker countries, तो stronger countries creates its terms and condition for the weaker countries. तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के किसका फायदा हो रहा है, of the strong country. तो यहाँ पे देखो, अगर अमेरिका is going to the weaker states, weaker countries and setting up their MNC, okay, or exploring some other area, some other benefits, setting up of industries, कुछ भी कारण जब weaker country पे जाता है तो बेसिकली वो अपना फायदा तो देखेगा ना वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली दे आर गेनिंग देयर इंटरेस्ट. ओके, बाय पुटिंग अप MNC there, by exploring up some markets there, maybe by exploring or by setting up the capitalist economic pattern there, कुछ ना कुछ हो रहा है. और सॉफ्ट पावर में क्या है, कल्चर, जो इकोनॉमी जब जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कल्चर भी जा रहा है, फैशन भी जा रहा है, ट्रेंड भी जा रहा है. ओके, खाना पीना रहना सहना ये सब कुछ का कल्चर जो है दैट ऑल इज गोइंग ऑन. एंड ये सब जब जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग एंड अट्रैक्टिंग द अदर कंट्रीज. और उसमें से रिटर्न में किसका बेनिफिट आ रहा है, यूएस का. ओके, नेक्स्ट वन इज इन कल्चरल स्फीयर यूएस हैज द एबिलिटी टू परस्यूट rather than course. तो यहाँ पे लिखा उन्होंने pursuit and course, दो शब्द लिखा वहाँ पे. pursuit मतलब क्या, pursuit मतलब appealing, attraction, influence, इसको बोलते हैं pursuit. ओके, course मतलब forcefully. तो देखा गया यूएस जो है ये तीनों सेक्टर में ज्यादातर मिलिट्री पावर में, हम देखेंगे बाद में, मिलिट्री पावर में यूएस समवेयर और द अदर इट इज coercively or forcefully it is applying its power, okay, in other countries. लेकिन अब जब इकोनॉमिक पैटर्न में आते हैं या फिर हम जब स्ट्रक्चरल पावर में आते हैं या फिर सॉफ्ट पावर में आते हैं, कल्चरल डोमिनेशन में आते हैं, जब देखा जाता है क्या
कि they are not forcing, they are not forcibly using power, but they are appealing and attracting the other countries here. Okay, so it is not forcing, but it is pursuing. Okay, next one is all ideas of good life, personal success, dreams of individuals and societies are dreams taken out of practices in 20th century अमेरिका. तो यहाँ पे लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, पर्सनल सक्सेस, ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज. तो पर्सनल, मैंने आपको बोला ना, जब हम कुछ स्टाइल एडॉप्ट करते हैं अमेरिका का, कुछ गाना सुनते हैं, कुछ फैशन करते हैं अमेरिका का, स्टाइल ऑफ लिविंग वे, कुछ उनका तरीका का खाना खाते हैं, तो वी थिंक वी आर फैशनेबल, वी थिंक वी आर स्टाइलिश, वी थिंक दैट वी हैव ईटन अप दैट फूड that belongs to America. Okay, so the dream, that way of living, that pattern of society is being changing now. Okay, so if you go to any countries in the world today, आपको कहीं ना कहीं अमेरिकन कल्चर का कुछ ना कुछ आपको दृश्य देखने को मिलेगा. Okay, some influence, some pattern, some way of living, some style, some fashion, कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा. So that is soft culture of America. Okay, तो 20th century America, okay, जो आज का 20th century America, right from 1991 के बाद जो hegemonic role प्ले करना स्टार्ट किया उन्होंने, और 20th century America today is most leading culture. Okay, तो इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, अमेरिका इज द मोस्ट सिडक्टिव, बहुत प्योर, बहुत इन्फ्लुएंसिंग, ओके, पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ टुडे. ओके, तो सारा कल्चर एक तरफा और अमेरिकन कल्चर एक तरफा. तो इफ वी टेक अप ऑल दिस एंड सम अप, तो हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट अमेरिकन कल्चर इज द मोस्ट अपीलिंग, ओके, मोस्ट अपीलिंग, मोस्ट अट्रैक्टिंग in the whole world today, and we are adopting that style, that culture of America. Today we are living in the dreams of America. Maybe we are living in India, we are living in any countries of Asian continent, any countries of African continent or other area. Okay, but we are living the dreams of that American pattern, American style, American way of living. ओके, सो स्टूडेंट्स, और इसके जो तरीका है, ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी अप्लाई इन आवर रियल लाइफ, दैट इज नोन एज सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजिमनी. ओके, तो सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजिमनी और द कल्चरल पावर ऑफ यूएस हेजिमनी. तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक पार्ट लिया ऑन द सॉफ्ट पावर. ओके, in my next area I will again tell you some examples of this soft power. So students, stay tuned, watch this video nicely, and then I am coming up with the next new attractive things, okay, that will really go on. और आप सोचेंगे, हाँ, ये तो मैंने अप्लाई किया मेरे लाइफ में. ओके, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.